Hello dear students and welcome to EduTap. So guys, if you're preparing for any regulatory body exam or any banking exam in the year 2026, this series is for you. Guys, इस series में हम top 100 reading comprehension passages discuss करने वाले हैं. Every day we are going to take up one comprehension and then we are going to solve it right here for you. और डेली आपको होमवर्क मिलता है अपने प्रैक्टिस के लिए ताकि आप खुद को भी टेस्ट कर पाओ. तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स जंप इनटू द सेशन. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम. Guys, this is part 5 of your top 100 reading comprehension. Now guys, in this video we will be discussing your reading comprehension passage which is based on your exam. Type of questions that are asked are based difficulty basically different. Some are factual, some are inferential, and there are a few vocabulary based questions as well. Now this video is going to be useful for any regulatory body exam, be it RBI, SEBI, NABARD, PFRDA, IFSCA, IRDA exam, or any banking exam like SBI PO, IBPS PO, RRB PO, IBPS Clerk, RRB Clerk, and SBI Clerk as well. So let's begin with the session, guys. So guys, we need to understand the strategy we need to follow in reading comprehension is reverse reading. Now what is reverse reading, guys? You read the questions based on the passage before reading the passage, and you mark the keywords in the questions so that you can locate them in the passage when you read it. Your aim is to read the passage only once with the help of reverse reading. Try to recognize the main idea of the passage, know what you have to look for before you start reading, and while reading the passage, locate the keywords that you have marked in the questions, and that will be your answer in your exam. So that is the strategy we are developing and we are going to practice it today. So this was the passage that I gave you as homework last week, and today we are going to discuss it and I'm going to solve it for you. So let's look at the questions first. Which of the following is true about the smart watch's role as per the passage? So smart watch का role क्या है वो हमें ढूंढना है. What of the following best summarizes the passage in one line? Passage की summary हमें बतानी है. As per the passage, can smartwatch be used as a substitute for medical professionals? हमें ये बताना है कि क्या स्मार्ट वॉच को मेडिकल प्रोफेशनल्स के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये हमें ढूंढना है. फिर हमें एक सिनोनिम ढूंढना है पैल्पिटेशंस का, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है इनफॉलिबल का, और फिर एक और एंटोनिम ढूंढना है इन्वेजिव का. तो चलिए ये 6 क्वेश्चन थे, तो सॉल्व करते हैं. पढ़ते हैं पहले पैसेज को और फिर सॉल्व करते हैं इनको. चलिए गाइस. स्मार्ट वॉचेस कैन बी अ ग्रेट टूल फॉर हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग. Most popular smartwatches on the market offer a heart rate monitor function, which has been primarily used by fitness enthusiasts for tracking their activity levels during a workout or throughout the day. Tracking heart rate is a great way to chart your own personal metabolic rate and allows you to compare your rate of exertion to other members of your age group, giving you a great indicator of your heart health. Heart rate monitoring can be a fun metric to track, but it's also one of the cardiologist's primary tools for assessing whether your health is functioning properly. Anyone can check their heart rate by pressing a hand against the wrist, which checks the flow of blood in the radial artery, or by pressing a hand against the neck, which checks the carotid artery. Now, physicians often use an electrodiagram, ECG or EKG, to interpret a patient's heartbeat. An EKG offers information that can tell your doctor 4 things. Number 1, whether your heartbeat is irregular, whether your heart is enlarged, whether your heart is getting enough oxygen, and whether you've had a heart attack in the past. Smartwatches track heart rate in a similar way as checking the pulse, but without the use of physical pressure. Popular smartwatches from brands like Apple, Samsung, and Fitbit use photoplethysmography to detect a heartbeat. Now, this is the process of projecting a green light on the skin which gets absorbed by the blood. More green light being reflected is related to lower blood flow, which indicates that the heart is in between beats. While smartwatches are not as complex as an EKG, new studies have shown that they may be capable of detecting one of the same health issues that an EKG can. Irregular heartbeat, also known as atrial fibrillation or AFib, is a health condition that can be a precursor to serious cardiac events and stroke. Testing for AFib is simple but important process for older adults, and it's important to contact a doctor if you've experienced symptoms which include heart palpitations, shortness of breath and chest pain. Palpitations है दिल की धड़कन, जब दिल धड़क वो होता है ना, palpitation होती है, उसको बोलते हैं palpitations.
तो आगे बढ़ते हैं. Some forms of AFib are harder to detect, however, and having a heartbeat-enabled smartwatch might be a great tool for finding the condition sooner. A study funded by Apple in the New England Journal of Medicine found that smartwatches had the capacity to detect AFib, but weren't necessarily reliable in always detecting it. Of the 400,000 participants in the study, 52% received an alert from their smartwatch that they had experienced episodes of an irregular heartbeat after 117 days of monitoring. Of those that saw a doctor after the notification, it was found that 70% of them experienced irregular heartbeat after taking a long-term EKG test. This shows that smartwatches can be used to detect AFib, but they will not catch it in 100% of the patients. There is anecdotal evidence of smartwatches saving lives, but they're useless without the work of a medical professional. So yes, they can't be used as a replacement of a medical professional. Smartwatches are a great way to monitor your heart rate and take an active step in understanding heart health, but they are not medical equipment. Smartwatches may be capable of detecting AFib, but they are not infallible. Infallible होता है जो कभी गलत नहीं होते. So they are not infallible and no substitute for the advice of a trained cardiologist. If you're experiencing uncomfortable symptoms like weakness, reduced ability to exercise, fatigue, lightheadedness, shortness of breath, or chest pain, it is imperative to speak to a medical professional regardless of whether you are wearing a smartwatch. AFib can be treated with myriad of both invasive and non-invasive. Invasive मतलब अंदर जाके और non-invasive मतलब बाहर से ही options with blood thinners being a simple and effective solution for many patients. But it's important to consult a cardiologist early. That is the point. So which of the following is true about smartwatches role as per the passage? It is used as a widespread screen for atrial fibrillation. No. It works as a generic barometer and cannot be deemed as a medical device. Yes. It monitors and assesses people comprehensively outside of the clinical setting. No. It is majorly used by younger strata of population. No. I think correct answer is option B. It works as a generic barometer and cannot be deemed as a medical device. Next question, what of the following best summarizes the passage in one line? AFib is permanent and medicines or other treatments can't restore a normal heart rhythm? No. How smartwatches can bypass the need of a clinical laboratories? No. Using smartwatch to detect AFib cardiac arrest remedy? Okay. The watch is smart but can't replace your doctor? Yes. And use a photoplethysmography to detect a heartbeat? No, guys. The summary is the watch is smart but it can't replace your doctor. That is the message given by the passage. Next question, guys. As per the passage, can smartwatch be used as a substitute for medical professionals? Yes, definitely. No. Yes, partially. No. No, definitely. No, partially. Correct answer is no, definitely. It cannot be used as a substitute for medical professional. No, the guys is clearly mentioned that they can't replace doctors. Next, guys, we have to find the synonym of the word palpitation. Palpitation मैंने क्या बोला था? दिल की धड़कन है, राइट? उसको जब दिल तेज तेज धड़कता है उसको palpitation बोलते हैं. तो closing, stability, retreat, no, motionless, thumping. Thumping is the right word, guys. Thumping वही दिल का तेज तेज धड़कने को palpitation या thumping ही बोलते हैं. फिर हमें ऑपोजिट बताना था infallible. Infallible जिससे गलती नहीं होती. योर ऑप्शंस आर एरेंट, एपोडेक्टिक. एपोडेक्टिक भी वही होता है जिससे कोई गलती नहीं होती. एफिकेशियस भी वही होता है जो बिल्कुल सटीक होता है. इम्पेकेबल भी वही होता है. अनकैनी भी. ये चारों इसके सिनोनिम है गाइस. एक ही ऑप्शन बचता है एंटोनिम, वो है एरेंट. एरेंट मतलब जिसमें कमियां या जो गलती कर सकता है उसको बोलते हैं एरेंट. तो इनफॉलिबल जिसमें कोई गलती नहीं होती. इनफॉलिबल, फॉल मतलब गिर जाना, राइट? इनफॉलिबल मतलब जो गिरता नहीं है, जो गलत नहीं होता. ऐसे याद रखना इस वर्ड का. और एरेंट उसका ऑपोजिट मतलब जिसमें गलतियां या कमियां होती हैं. एंड नेक्स्ट है गाइस, ऑपोजिट बताना है हमें इन्वेजिव का. तो इन्वेजिव जो इन्वेड करता है, तो इनकर्सिव, डिफेंसिव, इन्वेडिंग, इनक्रोचिंग, ट्रेसपासिंग मतलब वही होता है. बाकी सबका मीनिंग सेम है कि जो किसी को इन्वेड करते हैं, जो किसी के दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं. बट डिफेंसिव इज अपने आप को बचाना. तो इन्वेड करना मतलब दूसरे पे आक्रमण करना. डिफेंस अपने आप को डिफेंड करना. सो ऑपोजिट इज डिफेंसिव. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. तो गाइस इस तरह से पहले क्वेश्चंस पढ़ के हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ के समझ के उसको सॉल्व करना होता है अपने एग्जाम के लिए. और उसको उसी को हमें यहाँ पे रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है. तो चलिए गाइस, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके लिए होमवर्क पैसेज देके जा रहा हूँ. आपको ये पैसेज पढ़ना है. आप यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हो या इसका पीडीएफ ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो ये है गाइस आज का आपका पैसेज. ये आपने पढ़ना है और इस पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 5.
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, ये ढूंढना है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, उसका क्रिटिसिज्म है क्या है वो ढूंढना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑथर का एटीट्यूड क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, वो आपको बताना है. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा, उनका क्या सजेशन है, क्या सजेस्ट करते हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो बताना है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज, इनमें से कौन सा रिफॉर्म है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है. तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही गाइस, बट जाने से पहले मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा. गाइस, हमारा एक कोर्स है जो रेगुलेटरी बॉडी और बैंक एग्जाम दोनों को टारगेट करता है, जिसमें आपको सारे रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, नबार्ड, आईएफएससीए, पीएफआरडीए, इन सब की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू एंड गाइडेंस एंड वीकली मेंटर टॉक मिलती है. और एक अकेला है हमारा बैंकिंग का कोर्स, जिसको बैंकिंग एग्जाम महापैक बोलता है. ये सारे बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब को टारगेट करता है. इन सब की कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट और पीवाईक्यूज हैं. आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइस, वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस. आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है, और ब्राउजर मतलब अपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपने टाइप करना है बस edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और नीचे दिखेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, और नीचे आएंगे तो ये दिखेगा आपको हमारे बैंकिंग कोर्सेज दोनों, रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग कोर्स, और ये सिर्फ अकेला बैंकिंग का. अभी गाइस हम फ्लैट 77% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो कूपन कोड है वेलकम 2677. तो दिस इज द कूपन कोड फॉर योर 77% डिस्काउंट. सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ. और मेरे कहने पे मत जाओ गाइस, नीचे आओ, यहाँ पे आपको सब यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस के आपको डेमो लेसन दिखेंगे. आप यहाँ पहले डेमो लेसन देखिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और फिर अपना डिसीजन लीजिए कि आपको ये कोर्स कहाँ तक बेनिफिट कर सकता है और आपको क्या यूज़ है इस कोर्स का. तो आज के लिए इतना ही गाइस. डू शेयर योर फीडबैक विद अस अबाउट आवर लेक्चर्स, अबाउट द क्लासेस ऑन द ईमेल आईडी गिवन बिलो, feedback@edutap.co.in. और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 81462 07241. So that's our official phone number. So guys, thank you so much for your time and for your patience. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again. See you next week. Till then, all the very best.